हमारे डिस्ट्रिक्ट में. I'm going to tell you about that. Okay, so our district, Lahaul and Spiti, it's a remote district located in the northern western part of the Himalayas, and we can say it's on a brink, okay, दहलीज पे है of a great socio-economic transformation due to the construction of this Rohtang Tunnel, right? While this tunnel is highly significant for the influx of ideas, influx of you can say people, influx of technology, but it is going to have a serious consequences in the lifestyle of our valley, Lahaul-Spiti. Okay, so in science we used to study that science is considered both as a boon and a curse. Boon पता है क्या होता है? क्या होता है? Boon, what is boon? Boon and a curse. Science को हम एक वरदान और अभिशाप दोनों मानते हैं ना? Right? If utilized in a proper way, it is considered as a boon. But if utilized in a negative way or negative intention, then it is considered as a curse. बोलते हैं ना साइंस वरदान और अभिशाप दोनों है. Similar is the case with that of the Rohtang Tunnel, right? If थोड़ा सा अगर मैं रोहतांग टनल के बारे में बताऊं, रोहतांग टनल जो है, it was the construction of Rohtang Tunnel started in around 2008, okay, under the leadership of then former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, है ना? So now today this tunnel is named after our Prime Minister, former Prime Minister, right? We call it as Atal Tunnel, है ना? रोहतांग टनल को हम अटल टनल के नाम से जानते हैं, right? And it was opened for the public on around 4th October 2020, inaugurated by our Prime Minister Shri Narendra Modi, right? So this tunnel, it acts as a linkage between the two districts, District Kullu and District Lahaul-Spiti. So you can say it is an entry to this tribal pocket of our Lahaul-Spiti, right? So initially, when there was no tunnel, everything was covered with snow, as you can see outside, right? Every fields, every roads, and every connectivity was hindered, you can say. Everything was covered with snow, and there was no possibility to conduct or carry out any productive work, right? People used to stay in the in their homes, right, and enjoy their winters, you can say, right? And with the construction of this Rohtang Tunnel, now people have, you can say, a hope has ushered in the life of this our tribal area, Lahaul-Spiti, for a better future, you can say. And with the construction of this tunnel, we can say we have all-weather road connectivity, है ना? हर मौसम में हमें connectivity मिल जाती है. We get fresh supply of vegetables, and we can get emergency medical services for our old people and patients, right? And everything is easily accessible. But if we look at a commercial point of view, और अगर हम बात करें कि commercial definitions में अगर हम कहें, nothing comes for a free, है ना? There is no free delivery as such. आप देखते हो ना, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता, सब चीज़ का पैसा लगता है ना? So the same is the case with the construction of this Rohtang Tunnel. It does not come for a free, right? It has a serious consequence in the lifestyle of our valley. हमारे लाहौल-स्पीति डिस्ट्रिक्ट पे इसका बहुत सारा हम कह सकते हैं कि बहुत सारे consequences हैं, ठीक है? I'm going to discuss कुछ advantages मैंने आपको बता दिया कि advantages क्या हैं with the construction of the Rohtang Tunnel, है ना? What benefits we are taking from the construction of this Rohtang Tunnel? Exchange of ideas, है ना? Technology, easy accessibility. But let's discuss something about the consequences, something about the impact of this Rohtang Tunnel. Okay, first, if we discuss about its impact on the environment, you can say, or ecology, है ना? Environment और ecology की अगर हम बात करें, with the construction of this Rohtang Tunnel, around 17 hydroelectric projects are to be functioning in this चेनाब रिवर बेसिन, है ना? ये जो हमारे रोहतांग टनल के इसके साथ ही जो है हमारे जो चेनाब रिवर बेसिन है उसके ऊपर 17 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर टू बी फंक्शन, राइट, एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 49 तक बढ़ने की संभावना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है ना. एंड दिस नंबर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर फॉर अ लैंड फॉर आवर दिस
district Lahaul and Spiti with a population density of just 2% per kilometer. हमारे डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी यही है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी 2% पर किलोमीटर के हिसाब से डेंसिटी है. एंड दिस 45 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नंबर, and this number is a very large number for such a small land with a population density of 2% per kilometer, and this number has a capability to affect our ecology, our society, our environment in an irreversible way, है ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. इसका इफेक्ट ये पड़ने वाला है. एंड इफ वी टॉक अबाउट in our district there are around 4 major glacier depositions, है ना, and 18 mountain passes, 3 major lakes, and in a way it is indirectly affecting these glacier depositions. As you can see, आप लोगों ने देखा होगा every day when the tourist season is there, हर रोज new data are coming out, right, कि आज इतनी गाड़ियाँ रोहतांग टनल से पास हुई हैं, and the record was around 14 to 15,000 vehicles in a day, है ना. So you can imagine what consequences we are going to face, or what impact we are going to face with the construction. Although it is beneficial, but we are going to face some consequences, right? And with the influx of the tourists, you know, you can see, if not managed properly, our district can become a dumping site for the waste materials, है ना. जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा जो वेस्ट है उनका डिस्पोजल वगैरह अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो डंपिंग साइट बन जाएगी, राइट. एंड ये तो हो गया इन्वायरमेंट की बात. एज यू कैन सी आज के दौर में देयर इज अ ग्रेट क्लाइमेटिक चेंज ऑल्सो, है ना. जो बाहर का जो इफेक्ट्स हैं, इट इज अब क्योंकि सब कुछ एसेसिबल हो गया, एवरीथिंग इज एसेसिबल, राइट. सो इट इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो. आज के दौर में यू कैन सी इट वाज, पहले देयर वाज हैवी स्नोफॉल, नाउअडेज देयर इज स्कैंटी रेन, we can say snowfall also, है ना. So there is a lot of environmental and climatic changes that are indirectly happening because of the construction of this Rohtang Tunnel, right? And this was about the environment. And if we discuss about its impact on the food habits of our district Lahaul and Spiti, right? हमारे food habits क्या होते थे? We used to eat our जो traditional thukpa, sampa, and है ना, like that. Nowadays, which were the main ingredients that we used to grow in our land? हम लोग पहले we used to grow barley, and in Spiti we used to have black peas, मटर वगैरह होता था. But due to the accessibility and connectivity, we are now shifting our agriculture practices. We are not growing black peas, काला मटर वगैरह हम नहीं उगा रहे, because it is we are not getting money for that. अब क्योंकि सब कुछ accessible होता है, we have shift our agriculture pattern from black peas to green peas, which is commercially more important, जो हमें ज़्यादा पैसा देता है. We are not growing barley anymore, जो सत्तू वगैरह होता है हम लोग आजकल नहीं उगा रहे ना, ठीक है. So a great change is happening in our food style. And also if we discuss about its impact on our tradition, our culture, our language, it is indirectly affecting a lot. If we talk about language के कारण अब everything is accessible, we can easily, we are connected. Now हमारा language क्या हो गया? We are speaking Hindi, we are speaking fluent English, but we are not talking in our local languages. And also our traditional attire, है ना, we are wearing sophisticated dresses, है ना, modern dresses, influenced by the BTS and all those, and forgetting about our own culture. Initially people used to wear जो हमारा बॉयज़ का छुआ वगैरह होता था ना, एंड गर्ल्स का सुरमा वगैरह होता था, वी आर वेयरिंग दैट, बट नाउ वी वेयर इट ओकेशनली, एंड इन अ वे वी कैन से दैट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना. तो ये हमारे ट्रेडिशन पे, हमारे कल्चर पे, दोनों पे अफेक्ट कर रहा है ना. बट इट्स अप टू अस कि हमें अपने कल्चर ट्रेडिशन को कैसे प्रिजर्व करना है, राइट. इट्स अप टू अस. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट our relationship between us, है ना, हमारे आपस के relationship की बात करें. Initially what used to happen in the previous days, if there is a ceremony in a village or a marriage function, all the people used to come together, or even constructing a house, every people used to come together. They used to help at the construction site. In a marriage ceremony they used to help each other. But nowadays district laborers from different parts of India are coming to her, and
वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर. जो एक कम्युनिटी वर्क होता था, दैट कम्युनिटी वर्क इज नॉट इवन डन बाय अस. वी यूज्ड टू सेंड लेबर्स टू दोस places, right? So in a way it is affecting the interpersonal relationships also, right? And due to the influx of lot of tourists, we can say a lot of vendors वगैरह, जितने भी vendors tourists आएंगे तो we need to adjust those tourists, right? उसके लिए बाहर से vendors भी आएंगे, बाहर से जितने भी लोग आएंगे, जो business ideas हैं वो change हो जाएंगे. We can say हमारा जो tribal way of living है, that is changing, है ना? Initially we used to do focus on agriculture a lot, but nowadays what we are doing, we are changing our agriculture land into some kind of commercial buildings, hotels, guest house. So it is changing our tribal way of living, right? एक documentary है there, a documentary by Helena Norberg, है ना? She used to live in Ladakh for around now 20 years, है ना? उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया लद्दाख के कि किस तरीके से लद्दाख में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. ओके, ग्रेजुअल चेंज इज ओके, बट ड्रास्टिक चेंज इज वेरी डिजास्टरस और वेरी, वी कैन से वेरी चैलेंजिंग. हम कह सकते हैं बहुत खतरनाक है ड्रास्टिक चेंज होना, है ना? राइट. सो वी कैन से इन अ वे जो है दिस आवर लाहौल स्पीति इज इन अ वे टू बिकम द नेक्स्ट लद्दाख. लद्दाख में जो आज के जो दौर में जो चेंजेस आए हैं ना, इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी, एंड देयर इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर. लद्दाख में आई वाज देयर इन लद्दाख, वहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना वाटर का शॉर्टेज है ना, एवरीवन इज बाइंग बिस्लरी एंड ऑल दोस, एंड व्हाट हैपेंड टू द वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स देयर. पानी है नहीं वहाँ पे और टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है. सो द सेम इज गोइंग टू हैपन इफ नॉट टेकन केयर ऑफ, राइट? एंड अब जैसे शिफ्ट हो रहे हैं ना, nowadays what happens in Manali, what happens in Shimla, there is, आप लोगों ने सुना होगा, there is old Shimla, there is new Shimla, and in Manali there is old Manali, there is new Manali, and now यहाँ पे भी अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हो गया, there is lower Kelong, there is upper Kelong. So initially all the focus जो central area था Kelong was in the lower Kelong, but now सारे offices वगैरह यहाँ थे, but with the influx of tourists, influx of people, influx of you can say ideas or technology, we are shifting, है ना? Right. And one reason, एक डाटा है ना कि due to the construction, you can say initially आज के दौर में ना, the people of Lahaul-Spiti they are emigrating out, वो बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं. It's not a bad thing कि वो है, वो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जो है बाहर जा रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, इनिशियली द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज 35,000 अराउंड पूरे डिस्ट्रिक्ट का. नाउ इट इज अप टू 32,000. ठीक है. सो यू कैन सी व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो बेटर एजुकेशन के लिए हो, ऐसे ही बेटर एजुकेशन और बेटर लाइफ स्टाइल, राइट? बट दिस इज हैपनिंग, राइट? सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना? सो इसका इम्पैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? And what could be the solution? इसका solution क्या है? Advantages बता दिया, I told you about the impact, and what about the solution? Solution is the sustainable way of living, है ना? कि जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, what we can do? We can adopt the model adopted by different Bhutan model को हम adopt कर सकते हैं. What they are doing? They are following the, tourism is the main source of nowadays tourism. पहले initially तो agriculture भी होता था. Now tourism is the main source for the income of people in our district Lahaul and Spiti. What we can adopt is Bhutan model ecotourism, है ना? Ecotourism is a one possible way to tackle these things. Ecotourism के अंदर we can say eco homestays वगैरह. Homestays आज के दौर में one major change is the you can see the very big and sophisticated buildings, which is not according to the climatic conditions of this district Lahaul and Spiti. आज के दौर में पुराने ज़माने पे क्या होता था? मड हाउसेस होते थे, है ना? लोकल टॉयलेट्स वगैरह होते थे. नाउ these are changed by the high rising buildings, concrete buildings, and sophisticated bathrooms, toilets, है ना? राइट. सो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो हम
इको होम स्टेज वगैरह हो गया, लोकल होम स्टेज वगैरह हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ एक पॉलिसीज़ है, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसीज़ वगैरह हो गया, है ना. दीज आर सम ऑफ द वेरियस ways through which we can tackle the problems that is coming through. And कुछ आज के दौर में कुछ हम NGOs वगैरह क्या करें, दे आर जितने भी ऐसे NGOs हैं जो कि which are very much aware about the environmental problems that is occurring due to the construction of this Rohtang Tunnel, right? Such NGOs, we should help those NGOs, and we should keep our mindset in way that we need to protect our district, we need to keep it clean, we need to minimize the impact of this कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोहतांग टनल, राइट. आई होप कि आप लोगों को रोहतांग टनल के बारे में कुछ पता चला होगा, इसकी एडवांटेजेस हमें क्या क्या थे एंड उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाले हैं और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.